All right, viewers, as surreal as it sounds, the Taliban is all ready for its coronation in Kabul, Afghanistan. Yes, you heard it right. Government formation where the Taliban is concerned. The official announcement of the new Afghan government will be made tomorrow. India today has learned that Mullah Baradar, the head of the Taliban's political office, will lead the new government. Sources say Mullah Muhammad Yaqub, the son of late Taliban founder Mullah Omar, and Sher Muhammad Abbas will take senior positions. Sadr Ibrahim, a Taliban leader who's an expert in roadside blasts, is likely to be made the new Home Minister. Because while India is still in the grips of the pandemic, we're still not over it, the third wave is still anticipated, a new kind of viral fever, a vector-borne fever, is claiming many lives, especially children. Over 30 kids have died in Firozabad, Uttar Pradesh. A wave of viral fever. Hundreds infected, scores dead, most of them children. Uttar Pradesh's Firozabad district is gripped by a disease which has symptoms similar to dengue. Over 50 are dead so far. This family lost their child. टेस्ट हुआ तो क्या बताया था डॉक्टर की तरफ से? टेस्ट कुछ नहीं बताया, कहीं बताया कि ये कनम डेंगू बुखार है, प्लेट चली गई, बिल्कुल 75 रह गए, खाली 75. They blame the hospital carelessness for their daughter's death. डॉक्टर से रो के मैं विनती करती रही, मैंने डॉक्टर साहब मेरी बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है, देखो उसे. तो वो बोले कि तुम ऐसे चिल्ला के कह रही हो कि ज़्यादा आपको जल्दी है तो ले जाओ यहाँ से, भर्ती आगरा करा दो, हम नहीं कर पाएंगे दवाई. मैं खूब रोती रही लेकिन डॉक्टर ने नहीं सुनी मेरी कुछ भी. The government hospital in the district is flooded with patients presently. The facility, which has 100 beds, has admitted over 300. Many now are forced to treat their sick children with whatever help they can get, but at home. करीब 6वां दिन है आज और इलाज करा रहे हैं. उधर गए थे एल गुप्ता के यहाँ, वहाँ जगह नहीं मिली, फिर उन्होंने कहा सरकारी हॉस्पिटल, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी लंबी लाइन, वहाँ भी व्यवस्था नहीं है कि बेड पे 2 लेटे हैं, जगह नहीं है, तो फिर इलाज तो कराना ही है, तो फिर हम प्राइवेट करा रहे हैं. फिर अब जैसे भी बन रही व्यवस्था वैसी. Citizens allege that the district administration is to blame for the surge in viral fever. जब बारिश होती है पूरा पानी भरता है और पानी भरने के साथ साथ हम लोगों को निकलने की दिक्कत होती है. हर घर में 4-5 बच्चे पड़े हुए, मेरे घर में भी 2-3 पड़े हैं. इस टाइम पे जो रात को मैं दवाइयाँ लेके, मुझे बस ये साधन चाहिए, मुझे निकलने की जगह चाहिए और इतनी मतलब आप में का नाम आराम किया जाए जिससे कि 2 पैर रख के हम निकल जाए यहाँ से. हर कोई बीमार है, ये सब गंदगी के कारण ही है. और हमने कितनी बार इसकी एप्लीकेशन भी दे दी है और प्रशासन से और सबसे शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई. हमारी गली नहीं बनी हुई है और यहाँ गंदगी के कारण ये सारी बीमारी फैल रही है. The administration has now woken up and ordered a mass sanitization program in the district. फिरोजाबाद में जब स्थिति खराब हुई तो प्रशासन की नींद यहाँ पर खुली है. आप देख रहे हैं अचानक से फिरोजाबाद की अलग अलग गलियों में यहाँ पर फॉगिंग करनी शुरू कर दिया गया है. साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी इस वक्त किया जा रहा है. इससे पहले यहाँ की नालियों में गंदगी भरी हुई थी और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नालियों में कूड़ा भरा हुआ है और यहाँ पर आसपास बच्चे खेलते हैं, जिसके चलते यहाँ काफी नुकसान हुआ है. A 5-member team of doctors have reached the district to assess the situation on ground. 5 लोग की डॉक्टर्स की टीम आई है और डिफरेंट रोग के एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं उसके, और ये लोग उस क्षेत्र में जाके देखती है कि इसका कारण क्या है
कारण ढूंढेगी और कारण देगा तो उसके सुझाव देगी कैसे इसको प्रिवेंट करना है। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had visited the district to review the situation on Monday. शासन स्तर पर न केवल उपचार से संबंधित मामले को लेकर के बल्कि इसकी तह में जाकर के हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की संदिग्ध मामलों में बचाव करने के लिए क्या और भी उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में, और साथ साथ अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई होगी तो उसकी जवाबदेही भी तय करने के लिए। Till now, 3 government doctors in the area have been suspended on charges of laxity. The chief medical officer in the district was also shunted. With Jitendra Bahadur in Firozabad, Bureau Report, India Today. All right, moving on. Now, in Assam, the Himanta Biswa government has renamed the Rajiv Gandhi Orang National Park to the Orang National Park. Now, in midst of all the controversy, Himanta Biswa Sarma says that this is with the permission of the tea tribes who live there. Rahul Gandhi inspecting a photo exhibit of his father this week. Images that show him reminisce about his times with Rajiv. What I remember of my tours with my father, what was driving the tour was not just connecting with people. It was actually trying to understand their requirement, their need, and it was about listening to what they were trying to tell him. But away from this trip down memory lane in the national capital, a campaign to expunge Rajiv Gandhi's name is raging on. What began last month with the dropping of Rajiv's name from India's highest sporting award, the Khel Ratna, has now triggered a chain reaction in different parts of the country. On Wednesday, the Assam cabinet passed a resolution to rename the Rajiv Gandhi National Park, a tiger reserve, as Orang National Park. Taking cognizance of the Adivasi and Tea tribe communities' demands, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma directed the renaming, one that has expectedly sparked an emotive crossfire. Minority Muslim community. Jehetu etu Orang ba ei শব্দটো আদিবাসী আৰু জনগোষ্ঠীয় জনগোষ্ঠী সকলৰ কাৰণে সন্মানজনক বা তেখেতলোকৰ সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে তেখেতলোকৰ আহ্বানৰ প্ৰতি অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ললে যে যিখন অভয়াৰণ্য ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্য নামে নামাঙ্কিত সেইখন আজিৰ পৰা ওৰাং অভয়াৰণ্য নামেৰে নামাঙ্কিত হ'ব। It is nothing, just a farce. We condemn the attitude of the BJP-led Assam government. They have to tries to the writings of the wall. Time will reply everything. Remember, BJP government. Meanwhile, in Karnataka, BJP MP Pratap Simha from Mysore Kodagu has written to Karnataka Chief Minister requesting that the Rajiv Gandhi National Park and Tiger Reserve there be renamed Field Marshal K.M. Kariyappa National Park and Tiger Reserve in honor of the legendary Army Commander-in-Chief and Field Marshal from the state. In his letter, Simha says that there has been an attempt by the Congress to wrongfully appropriate the inheritance of projects of the governments of India aimed at biodiversity conservation. The Congress has refused to take the proposal lying down. It is a routine practice. They want to remove Rajiv Gandhi, Indira Gandhi legacy. They want to make it their own party people. Then at that time, when freedom time, how many people as RSS and BJP people who have fought for the freedom? Rahul Gandhi, who has spent this week with hundreds of pictures of his father's journey, hasn't reacted to the twin moves yet, but this must feel personal. With Assam biting the bullet and Karnataka appearing to go the same way, has a war been declared on the hundreds of institutions and establishments and awards that continue to carry the Nehru-Gandhi name? With Nagarjun Dwarakanath in Mysuru, Bureau Report, India Today.
All right, viewers, let's move on now to a rather strange, bizarre and an embarrassing story at that. Now, this concerns deep embarrassment coming in for the JDU government there. Why so? An MLA from the party embarrassed the ruling party of Bihar after being spotted roaming around in his undergarments while travelling on a train on Thursday. He was also accused of abusing and threatening other passengers, following which a passenger went ahead and raised a complaint against the MLA with the railway police forces. The MLA was shifted to another compartment. He says he was suffering from dysentery. ये जो आपने फोटो भेजी है गोपाल मंडल जी के क्या हंगामा हुआ है ट्रेन में, तो क्या घटना हुई? घटना देखिए, जब घटना घटी थी जैसे वो नॉर्मल पैसेंजर के तरह हम लोग बैठे अपना अपना सीट पे सब लोग बैठे, वो बैठे थे 13, 14, 15, 16 पे और मैं बैठा था 19 पर 21 पर। तो वो बाथरूम के लिए जा रहे थे गंजी जंगिया में। तो मैं बोला कि सर जरा गमछी लपेट दीजिए और महिलाएं भी है। कौन खराब बात बोले हमारा, ये बात बताइए। उधर से लौट के आए, गए गमछी पहने और 3 आदमी इनके साथ और है। अच्छा। जो 4 आदमी आके और मेरे जो पुपा है सेकंड एसी का A1 का, वहाँ आके अब पूरा हमको माए बहन किए, मेरा मास्क को खींच लिए मेरा चेहरा देखने के लिए। ये गोपाल मंडल विधायक ने किया? जी जी। अच्छा, मतलब गाली गलौज हुई और मारपीट की भी कोशिश हुई? मारपीट की कोशिश की गई, कहीं भी लाओ गोली मार देते हैं। पता नहीं विधायक है, लाइसेंस पिस्तौलों का ले जा रहे होंगे मारने की, उसी मतलब निकाले नहीं लेकिन मुंह से बोले। All right, viewers, news coming in from Andhra Pradesh and the Jagan Mohan Reddy government. The very latest is that Andhra Pradesh government has disbursed 1,124 crore rupees worth of incentives to MSMEs, textile and spinning mills that employ nearly 12 lakh people. Chief Minister Y.S. Jagan released the amount by pressing the computer button at the camp office. 440 crores were distributed to textiles and 684 crores to spinning mills. The state government has been making efforts to attract investments to the tune of 10,000 crore rupees by setting up electronic units. The government proposed YSR electronic manufacturing cluster in Koparthi for 730 crores. Welcome back. You're watching a fact check segment where we bust certain claims masquerading to be facts on social media platforms and WhatsApp groups. Now, there's a video floating about suggesting the Taliban ambushed resistance forces in Panjshir. The fact check on that, this viral video is a 7-year-old video, nothing to do with the current situation in Afghanistan or Panjshir. With that fact check, time for us to go into a quick break. To stay with me, on the other side is To The Point.